Hello, good afternoon, everybody. Welcome to the last part of the chapter Diversity and Discrimination. Today, we are going to discuss some of the examples given in Let's Recall, that's the NCRT exercises, and we will wrap it up. So, welcome again. Good morning. So we'll begin with the questions we have already discussed. The match the following statements in a way that challenges stereotypes. Right now, the next one that we are going to discuss is how can the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter. Imagine this situation and this list at least five different effects that the stereotype can have on the way daughters get treated in the house. Now, the stereotype is that the girls are a burden for the family. Like that's the stereotype. What are the effects of the stereotype? अगर आप लड़की हो तो आपको क्या क्या सहना पड़ता है कि अगर सोचते हैं लोग कि लड़कियां घर में पैदा होना बर्डन है तो क्या स्टीरियोटाइप सहना पड़ता है और क्या प्रॉब्लम्स सहना पड़ता है या यू कैन कमेंट आप उसके बारे में आंसर डाल सकते हो लिस्ट यू हैव टू लिस्ट some of the effects of the stereotype. Now I will tell you one. The one effect of the girl is they may not send her to school. Why? Because first they think she's a burden to the family. Second one, will they think of giving her a good education when they themselves think she's a burden? No, she won't get education. Second one, she will be forced to work inside the home. She will be made to work inside the home, either work inside the home or take care of the siblings. उनके siblings होंगे तो उनको take care करने के लिए डाल देंगे. And all they will be looking at is marrying her off. is एक बार शादी करके उसको बेच दो बस हो जाएगा. सिर्फ शादी के बारे में ही सोचते होंगे parents and they wouldn't be thinking about the welfare of the child as an individual. तो नहीं सोचेंगे. राइट इथन यू आर राइट. बाकी सोचो बाकी क्या हो सकता है. शी विल बी कंपेल्ड टू हेल्प अदर्स. अगर ब्रदर होगा बॉय होगा एल्डर ब्रदर और यंग ब्रदर शी विल बी कंपेल्ड टू हेल्प हिम because anyhow they think she's a burden. Now this happens again, I'm telling you guys, we have something called a sex ratio. Sex ratio is number of male for number of female. Now what do you think? Equal, right? If number of males is 1,000, the females must be 1,000. That's what equality is, right? But in our country that is not like that. In some states we have more females and some states we have less females. That's what the sex ratio is. Now if you go to Haryana, the number is very less. In the whole country, Haryana has the least number of females. That's the sex ratio. And Kerala has the highest sex ratio. Why do you think so? Because Kerala, there is awareness that girls are not a burden and they provide for the girls, and the system is also good. So the girls go to school, girls get educated, and girls are probably in good jobs as well. But whereas in Haryana, there is a feeling that girls are a burden. Now it's going, now it's there is reformation taking place. Now it's not the same thing which it used to be, right? 20-30 years before. Right, let's go to the next question. What does constitution say with regard to equality? Why do you think it is important for all people to be equal? Why do you think it is equal is needed? Because there should not be no discrimination. We are all born as human beings and we require to be treated equal because we belong to the same race. There is nothing called the higher caste or the lower caste or rich or poor. We should be treated equally. If you believe that we are created by the God, then it should be, or we should be treated equally. That's what the constitution says. In Haryana, people don't respect women. And now it's changing, Ethan. People do not respect से ज़्यादा हमें ये बोलना होगा कि दे थिंक दे आर द बर्डन वो सोचते हैं. बट ना चेंजेस है. आपने इसके बारे में सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना. नाउ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. उसका मतलब क्या है कि अगर बेटी पढ़ती है
तो शी विल बी सेल्फ रिलायबल, तो उसको स्कूल भेजना है. नाउ इट्स कंपल्सरी. नाउ विल सी द गर्ल्स आर कमिंग आउट टू स्कूल मोर देन द बॉयज, राइट? इफ यू टेक द रिजल्ट्स, अब 10th का रिजल्ट्स ले लो या 12th का रिजल्ट्स ले लो, लड़की टॉप करती है लड़के से ज्यादा, लड़कियों का पास परसेंटेज ज्यादा होता है लड़कों से ज्यादा. तो ऑब्वियसली द गर्ल्स आर प्रूविंग देम wrong by saying that if they go to schools they can achieve more than the boys, right? Let's go to the next one question. Sometimes people make prejudiced comments in our presence. We are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there. Divide the class into groups and each group discuss what they could do in the following situations. मैं आपको situation बताऊंगा, आपको इसका आप क्या करेंगे आपको टाइप करना है. थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइप करने में, तो आप बताएंगे क्या? लेट्स सी. फर्स्ट, a friend begins to tease a classmate because he is poor. आप क्या करेंगे if you would have been there? If your friend teases somebody just because he is a poor person, what would you do? आप क्या करेंगे? Okay, I will looking for your answers. I'm looking for your answers. What would you do if anybody fight for him? Very बढ़िया. Isha Sahasra, fight for him. Okay. What else can you do? You're just small, right? You cannot fight. I would scold him. Okay. Now, if you go and fight, will the teachers not scold you because fighting is not allowed in school? What can be done? Can it be reported to the teacher? It can be reported to the teacher. बहुत बढ़िया fun. It can be reported to the teacher, right? Immediate concern. Teacher. Go to the class teacher or a teacher and you can report that this is happening and the teacher will take care. Or me. Yeah, you can report to me. You can report to me. You can report to any teacher. Let's go to the next one. You are watching TV with your family and one of them makes a prejudicial comment about a particular religious community. आप टीवी देख रहे हो और आप में आपके घर में कोई प्रिजुडिस कमेंट बनाता है और बोलता है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? कमेंट पता है ना, कम्युनिटी के बारे में कमेंट करना. ये कम्युनिटी तो क्या बोलेंगे? सी, रिमेंबर, देयर इज अ फेमस सिंगर, एक फेमस सिंगर है, सोनू निगम उनका नाम है. सोनू निगम मेड अ स्टेटमेंट दैट जो आप सुनते हो मुस्लिम कम्युनिटी का जो मॉर्निंग प्रेयर होता है उनका, अजान बोलते हैं उसको. अजान सुबह सुबह होता है, 5:30 को अजान होता है एंड ही इज लिविंग नेक्स्ट टू. तो उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि अजान होने से हमारा नींद खराब होता है. तो काइंड ऑफ लाइक अ प्रेजुडिशियल स्टेटमेंट, राइट? तो अगर ऐसे कुछ स्टेटमेंट होता है तो आप क्या करते हो? इट्स इन योर होम, यू कैन नॉट रिपोर्ट टू मी. आप मुझे रिपोर्ट नहीं कर सकते सेइंग दैट मेरा फैमिली में ऐसे चल रहा है तो आप बोलो. आई कैन नॉट से दैट, राइट? बिकॉज योर पेरेंट्स आर देयर. सो what is it, Ashes? And I will say, don't differentiate them. Badhiya, Parinit. If you can convince your parents or your brothers or sisters that this should not be done, differentiate mat karo. That's the nice way. I will be silent because I can't disagree with your family. Oh, Satvik. Oh, family is everything. I read something yesterday. My status में था कुछ एस familiar to ऐसे कुछ था स्पेनिश में. Family is everything. They earn like that. Singer कहाँ से टपक पड़ी? I can't do anything. I'll report to my parents. What if your family is the one who comments? Right? You should tell them. हमेशा याद रखना है कि whenever it is right, you have to take a stand for the right, and whenever it's wrong, you have to take the stand against the wrong. चलो आगे बढ़ते. थर्ड वन. Children in your class refuse to share their food with a particular person. They think she's dirty. They are not sharing food with somebody because might be not properly dressed. पहले तो do you share the food with somebody? I think you do, right? Community lunch होता होगा नहीं है, याद भी है मुझे. Some of you brought from the primary when you are there. तो community lunch होता है तो share करते हो आप. And what about sharing? If anybody refuses to share to some boy or a girl who is not clean, so I would suggest to help her and give her proper food. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया.
I'll share my food. I'll share. Okay, fine. I would tell the teacher and be friendly to that child. That's good. वो अच्छा है because आपके लेवल में फाइट करना या गाली देना शोभा नहीं देता है ना. तो it's better that you tell him either if it's dirty you can tell him to clean and wash and come and report to the teacher. But denying food or not sharing the food would not be advisable. Okay, let's go to the next one. Someone tells you a joke that makes fun of community because of their accent. ये तो आपने खूब सुना होगा ना. एक्सेंट. कुछ लोग अच्छे नहीं बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडियंस डू नॉट हैव अ गुड एक्सेंट ऑफ इंग्लिश. तो नॉर्थ इंडियंस इंग्लिश जब बोलते हैं तो थोड़ा सा उनका, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको. स्कूल, राइट, व्हाट वी से, व्हाट वी प्रोनाउंस एज स्कूल, व्हेन द नॉर्थ इंडियंस जो हिंदी नेटिव स्पीकर होते हैं उसको स्कूल बोलते हैं. स्कूल, स्कूल बोलते हैं. तो हमें तो वैसे भी मजाकिया लगता है, वी फील. बट उनको कमेंट करने के टाइम में आपको क्या लगता है एक कम्युनिटी के एक्सेंट के ऊपर कमेंट करना? केरलाइट्स का भी होता है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम अदर इफेक्ट, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज. सी इन कन्नड़ा वी से स्विच ऑन माडू. स्विच ऑन माडू मतलब स्विच ऑन करो. And if in English you also say like that only, on the switch. Yeah, on the switch means switch on करो. Native speaker जैसे बोलता है वैसे होता है, but English में ऐसे नहीं है ना. It would be like, would you turn on the fan or would you switch it on? ऐसे कुछ होगा. Do we use it? We do not use. तो उसके बारे में, हाँ, उसके बारे में मजाक नहीं करना. Because we have to agree. Sometimes what happens that we pronounce some words, we mispronounce some of the words क्योंकि हमारे नेटिव लैंग्वेज अलग ही तरह से बना है. आपने कहाँ से सुना है? हैव यू, और लेट्स पुट इट लाइक दिस, आपने ऐसे कौन से लैंग्वेज को सुना है जो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा ये नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आई मीन इफेक्ट नहीं होता? इज इट कन्नड़ा? इज इट तमिल? इज इट मलयालम? तेलुगु? नॉर्थ में तो होता है, हिंदी नेटिव स्पीकर्स होते हैं तो इंग्लिश में उनका थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलता ही है. जनरलाइज मत करना. डू नॉट जनरलाइज. देयर आर प्रोबेबली वेरी गुड स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश इन नॉर्थ इंडिया टू. आप अगर तमिलनाडु से हो, तमिल बोलते हो, तो उनकी इंग्लिश थोड़ा फाइनर वर्जन होता है. एक्सेंट इज फाइनर कंपेयर टू व्हाट द केरलाइट्स स्पीक एंड व्हाट कन्नडिगा स्पीक्स. एंड तेलुगु वाला भी उससे ज्यादा होता है. तमिलियन का ज्यादा होता है. I will tell can speak Spanish. No, so that okay, fine. Don't make jokes of others based on their accent. Good. अगर आप जोक करोगे यहाँ तो आप जाएंगे कल यूनाइटेड स्टेट्स. व्हेन यू स्पीक द सेम इंग्लिश देयर, दे आर गोइंग टू जोक ऑन यू. आपके ऊपर जोक करेंगे, सेइंग दैट ब्लडी इंडियंस करके आपको बुलाएंगे, है ना. बिकॉज उनके एक्सेंट अलग है और उनके नेटिव लैंग्वेज है. हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारा तो ये एक्वायर्ड लैंग्वेज है, इसलिए ना मजाक नहीं करना. Let's go to the last one. Some boys make remarks about girls not being able to play games as well as them. तो क्या करोगे आप? Like it's a PT period. आपको PT period है, आप बाहर जा रहे हो, लेकिन लड़कियां आपके साथ खेलते नहीं है बिकॉज लड़कियां बातें करने में बिजी है. They will go and they don't want to play these physical games. They don't want to play kabaddi, cricket, football. All they will play छोटा छोटा सा गेम, पता नहीं, लूडो, कैरम सब खेलते होंगे. तो ऐसे प्रेजुडिस जो है, आप कैसे, हाउ विल यू डील विद इट? आई डिड नॉट सी गर्ल्स प्लेइंग कबड्डी इन स्कूल. मतलब बड़े बच्चे तो खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं, मैंने नहीं देखा स्कूल में. या दे वुड सिट क्वाइटली और टॉक, गॉसिप करते हैं. आई विल बी ऑब्वियसली देयर इन द ग्राउंड. मैं हमेशा ग्राउंड में ही रहता हूँ. कभी कभी मेरा फ्री होता है एंड चिल्ड्रन कम अप टू मी एंड मैंने अमोघ को पकड़ा है ना. अमोघ, इफ यू आर देयर, अमोघ है तो अमोघ को पकड़ा है. ये विल बी देयर सिटिंग. आकांक्ष विल बी देयर फ्रॉम 4th. तो आकांक्ष को बुलाएंगे, हम बातें करेंगे. बॉयज भी बातें करते हैं, ऐसे नहीं. गर्ल्स सबसे ज्यादा करते हैं बातें एंड बॉयज तो बिजी रहते हैं. आई हैव सीन सात्विक प्लेइंग हैंडबॉल और फुटबॉल और वॉलीबॉल. मैंने देखा है बॉयज विल बी बिजी इन द पीटी पीरियड. तो वो बैठते नहीं है कहीं, बिजी रहते हैं. एंड व्हेन द गर्ल्स रिफ्यूज, आप क्या कर सकते हैं? यू कैन कन्विंस, राइट. आप कन्विंस कर सकते हो, बोल सकते हो आ जाओ हमारे साथ खेलना है, बिकॉज फिजिकल गेम्स आर ऑल्सो फॉर गर्ल्स टू. बट व्हेन दे गो टू हायर क्लासेस, दे प्ले लाइक 8th 9th से वो शुरू करते हैं. सर वी आर इन 4th and 5th, वी वुड प्ले. ओके, ईशा सहस्रा, गुड. आप खेलते हो तो बहुत बढ़िया है. प्लेइंग कीप्स यू फिट एंड फाइन.
साउंड रखता है आपको, तो अच्छा है, आपको खेलना चाहिए, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। या यू वुड सी मी विद माय बेस्ट फ्रेंड तोतराम सर। अभी तो नहीं देखोगे ना तोतराम सर तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Discuss in class about different groups are suggested for above situations, and yeah, we did discuss about these. So I think that brings to the end of the chapter, and इसके बारे में मैंने recall भी कर दिया, तो there is nothing left to discuss about this one. फिर भी अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं तुरंत उसको वाइंड अप करूंगा। याद रखना, इसके बारे में नोट्स मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यू कैन राइट द क्लास वर्क एंड द होमवर्क विच विल बी प्रोवाइडेड सून। सून मतलब बाय इवनिंग आई प्रोवाइड। तो मैंने जल्दी शुरू किया बिकॉज मेरा नेक्स्ट लाइव भी है 8th के लिए, इसलिए सेंड ऑल द नोट्स। आई ट्राई, बट आई ट्राई, एक्चुअली आई कैन नॉट कंपाइल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं ट्राई, डेफिनेटली आई ट्राई एंड पुट ऑल द चैप्टर्स। सो बस आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, and thank you so much again, and take care and have your lunch and enjoy the day. Bye bye guys.